ప్రభుత్వ అవినీతిని ప్రశ్నించే వారిని మోదీ సర్కారు వేధిస్తుందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత సుప్రియా శ్రీనాథ్. ఎన్నికల బాండ్లపై ఉన్న పోస్టులు తొలగించాలంటూ ఎక్స్కు ఈసీ నోటీసులు ఇవ్వడం సరికాదన్నారు. ఇప్పటికే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాను మోదీ కబ్జా చేశారని ఆరోపించారు. కొన్ని మీడియా సంస్థలు నిత్యం మోదీ జపం చేస్తున్నాయన్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు నిజాలు తెలుస్తుంటే ఓర్వలేకపోతున్నారని చెప్పారు. నిజాలు చెప్పేవారి సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను బ్లాక్ చేస్తున్నారన్నారు. ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా జరిగేలా ఈసీ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు సుప్రియా శ్రీనాథ్. Directives to delete certain posts from political platforms. One of those posts was about electoral bonds. I think the Election Commission is well within its rights. As an election regulator, the Election Commission, it's incumbent upon the Commission, it's incumbent upon those people to ensure free and fair elections happen. It also is incumbent upon them to ensure that whenever somebody breaches the model code of conduct, they should be hauled up. And that includes hate speech, that includes religious references, that includes absolutely crass, vulgar statements. So which is why it's very surprising that the Election Commission chose to get a tweet deleted which raised the issue of electoral bonds. Why would they do that? One doesn't understand, but obviously electoral bond is an issue which makes the government extremely uncomfortable. The Prime Minister tried his best to explain it. He sounded not just defensive, he stopped making sense on electoral bonds. It's a fact of life that the whole blueprint of how people who donated through electoral bonds were the ones who were winning the big contracts. People who were being raided by CBI, ED and income tax were giving and paying big money in electoral bonds and were getting relief from these agencies. So this was an entire extortion racket. This was entire cut money that was happening, and the country now knows about it. And like my leader said today, Narendra Modi is the champion of corruption which was breeding right under his nose. He's facilitated it, he's ensured it, and he's the champion of that corruption. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र पत्रकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो जो चरण वंदन वहां पर दिन भर मोदी 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 होता है, वो यहां पर भी हो, इसलिए ये किया जा रहा है. तो इस बात पर चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय शैडो बैनिंग का है, ये विषय सप्रेशन का है, ये विषय रीच खत्म करने का है, ये मोनेटाइजेशन खत्म करने का है. ये कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का है कि अगर आपने असहज सवाल पूछे तो आपकी आय के साधन पर प्रहार होगा, आपके बोलने पर प्रहार होगा. आप अगर ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पर लिख रहे हैं, आपके पेजेस को, आपके हैंडल्स को बंद कर दिया जाएगा. और ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म्स अंडर प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है. और हम आशा करते हैं कि सरकार समय रहते चेतेगी और लोकतंत्र को जीवित रहने देगी. कितनी हत्या करिएगा लोकतंत्र की, कितना शनै शनै मारिएगा लोकतंत्र को, कितने लोगों को चरण चुंबक बना लीजिएगा. एक है तो आपके पास पूरी फौज चरण चुंबकों की, उसी से खुश रहिए, दूसरी ओर क्यों बनाने ऐसी चीजें. तो मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है, और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हर उस काम में जहां पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन होता है, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एक्शन लेना चाहिए. लेकिन यह एक्शन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे इशू पर लिया जाएगा तो थोड़ा सा चिंता होगी, थोड़े से सवाल उठेंगे. तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता बची रहे, मुद्दों पे बात करने वाले लोग बचे रहें, इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को